Do you need some better photo editing apps? I'm Taylor Martin, this is Pocket Now, and these are the best photo editing apps for Android. With relatively impressive cameras fastened to the backside of our smartphones, we have a decent camera on our person at virtually all hours of every day. It's easy to get carried away with snapping photos of important life events, scenic places we may pass by, unusual sights, and of course food. But not every picture turns out exactly as you might want or expect. Sometimes you might want to add some effects to a picture to make it more dramatic or moving. Maybe the colors are off a bit, or the contrast is too low, or maybe you want that vintage effect. On Android, photo editing applications are a dime a dozen. There are literally hundreds, if not thousands, of photo editors, but there are a handful of photo editors that stand out from the rest. In September, Google bought Nik Software, the company behind the very popular iOS photo editor, Snapseed. In December, the iOS application was dropped from $4.99 to free, and the Android version was released to the Play Store. Ever since, it has easily been my choice photo editing application on both Android and iOS, and the one that I recommend to everyone else. On the surface, Snapseed may seem almost identical to the masses of standard photo editing applications, but its ease of use and the speed and ability to tweak almost any aspect of any photo or filter makes it one of the more robust and intuitive photo editors around. Editing a picture is as simple as sliding your finger up and down to choose from different metrics and left and right to adjust the intensity. Almost every picture I take with my phone goes through Snapseed before I share it. The best part is Snapseed is entirely free. Also, recent updates to the Google Plus applications for iOS and Android have also implemented some of Snapseed's best features. Another photo editor that is packed to the brim with neat features is PicsArt. It too is free, and basically it's another one of the dozens of photo editors with a ton of filters that are highly customizable. But it comes with the ability to add text to photos, draw on them, add stickers, and much more. On top of all that, PicsArt is sort of a social network in itself, allowing users to upload edited photos directly to their PicsArt account, not unlike Instagram. And from within the app, you can view other users' photos too. The photo editor I've been using longer than any other application on Android is Pixay Pro. It's definitely not the prettiest app. Its interface is reminiscent of Android 2.3, Gingerbread. But that doesn't take from the sheer functionality of Pixay. It offers everything from exposure, contrast, and saturation adjustment to sharpening, red-eye fixing, and a wide array of filters. Like PicsArt, it also allows the user to insert stickers, text, and frames to their photos. Pixay is generally my go-to application for adding text, annotating, except for when I'm using the Galaxy Note 2, and adding a big, giant arrow to point to something in the picture. But using it most definitely requires the ability to appreciate function over form. Pixay comes in a free light version, and the premium version, which unlocks features such as full resolution export, costs $3.99. If none of these applications quite do it for you, there is another option. However, it does cost more than Pixay Pro. Photoshop Touch is essentially a lightweight version of the popular Adobe Photoshop application for computers. But make no mistake, it is easily the most adept and well-rounded photo editor on any mobile platform. And it's almost as intuitive and as fast as Snapseed. Almost. Photoshop Touch allows a user to use scribble selection to intelligently extract portions of images, layer photos, and export images up to 12 megapixels. It also includes its own set of filters, a wide array of selection tools, and other various tools for inserting text and applying different effects. Photoshop Touch for phone is $4.99, and separately, Photoshop Touch for tablets is $9.99. Keep in mind that Google has also added some much-needed editing features to the stock gallery application on Android. It now has built-in filters, frames, and sliders for sharpness, exposure, brightness, contrast, saturation, etc. There is also a hidden menu for the history of the edits made to the pictures for a quick backtracking process. This is accessed by a right-to-left gesture on the picture itself. This editor is quick and simple to use. Best of all, it's built-in and free. For most, the built-in editor will suit most of your needs. But if you're looking for more extensive editing, definitely check out the previously mentioned apps. That's all I've got for you now, so if you liked the video, be sure to give it a thumbs up and subscribe to the channel. Also, follow us in all the usual places, Google+, Twitter, and Facebook at Pocket Now. I'm Taylor Martin, and have a good weekend.
हेलो गाइस, मैं आज आपको एक दो एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा जिसका नाम है ओवरले और स्नैपशीट। ये दोनों एप्लीकेशन गूगल के एप्लीकेशन है। ओके, तो हम इसे खोलते हैं। अब इसको खोलने के बाद हम कोई भी पिक रैंडमली चूज करते हैं, जैसे मैंने कर ली। इसके बाद आप कोई भी साइट चूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं राइट पे कनेक्शन करूँगा। उसके बाद हम ये इस पे जाएंगे तो हम इधर कुछ भी टाइप करके कुछ भी इधर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें जा सकते हैं। इससे हम अच्छे ये एडिटिंग वीडियोस करना है। और फिर उसके बाद ये कार्टून्स हम उनको भी डाल सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये शेप्स, ये बहुत अच्छे शेप्स हैं। हम इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। इस पर ओके करना पड़ेगा, इसके बाद ये अनलॉक हो जाएंगे सारे। इसके बाद हम जाते हैं एडिटिंग के अंदर। इतने सारे एडिटिंग है इसके अंदर। देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसके बाद ये हम यहाँ से ब्राइटनेस चूज करते हैं, कितनी भी कर सकते हैं हम। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन का रिव्यू देता हूँ। इसका नाम है स्नैपशीट। जैसे मैंने बताया था, हम कोई भी रैंडमली फोटो उठा लेते हैं। इसके बाद हम इधर एडिट पे क्लिक करेंगे। फिर इधर देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं इसमें। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इधर हम क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिटेल्स, ट्यून इमेज, पर्सपेक्टिव, वाइट बैलेंस, ब्रश, सेलेक्टिव, हीलिंग, विजिबिलिटी, टेक्स्ट, कुछ भी क्लिक कर टेक्स्ट करके इस पर। जैसे मैं टेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये टेक्स्ट है, डबल टैप करना पड़ेगा। इसके बाद हम कुछ भी ऐसे टाइप करके ऐसे। बहुत ही अच्छा है एप्लीकेशन। ये देखिए, इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। कोई भी कलर। ये ओपेसिटी है, इसको हम कितना मतलब ट्रांसपेरेंट करते हैं, नहीं करते हैं, वही चीज़ है। उसके बाद हम एडिटिंग में जाएंगे। देखिए, लाइन्स ब्लर, इसको ब्लर कर सकते हैं ऐसे करके, किसी भी शेप में कर सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद हम जाते हैं HDR स्कैन। ये देखिए, ये HDR स्कैन पे। और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट फेस में जाते हैं। ट्राई हार्डर पे क्लिक करेंगे। इसमें कोई फेस डिटेक्ट नहीं होगा, इस वजह से अगर आप अपनी पिक डालेंगे ना, आपका फेस होगा तो फेस डिटेक्ट करेगा ना, तो अपने आप एडिटिंग करेगा। इसके अंदर फ्रेम है जितना आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये ग्रेन फिल्म पे क्लिक करते हैं। इसमें भी बहुत सारी एडिटिंग है, अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अब हम जाते हैं लेंस ब्लर में। लेंस ब्लर तो देख लिया हमने। ग्लैमर में जाएंगे। बहुत अच्छी एडिटिंग है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए please. Wants to add those little tweaks to make their photos really pop, and there are a metric ton of apps that can do just that. Searching for photo editor apps in the Google Play Store will return enough results to make your head spin, so we put together a list of the best photo editor apps for Android. Please note, none of these have the power that something like Photoshop has. For more serious photo editing,
you'll still need a computer. With that being said, let's get started. Everybody in the front.